Hello, my wonderful friends. I hope you all are doing great. So friends, I strongly believe that हम में से काफ़ी लोगों ने laws of attraction के बारे में ज़रूर सुना होगा. This is something which can change our life completely. So, in today's video, we are going to discuss about some basic principles of laws of attraction. So if you're interested in this topic and would like to know what all these principles are, then I would request you to please watch this video till end to get the best out of it. So let's start it. Welcome to Mindiology, the platform for skills, lifestyle and career development. I'm your host and host Deepak from the team Mindiology. So let's start today's video. So we are going to talk about the basic principles of laws of attraction. So the first and foremost principle is that your mind is magnet. Yes, my friends, जब भी हम laws of attraction की बात करते हैं, we must first think about your mind, because this is the ultimate source of information. This is the ultimate powerhouse which we have. यही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़, और I would say everything we can control. So when it comes to this particular principle that your mind is magnet, it means अपने हमारा जो mind है, जो हमारा दिमाग है, वो एक magnet की तरीके से है जो हर चीज़ को अपनी तरफ attract करता है. If we will get into the bad things or the problematic things, it will definitely attract those things. And at the same time, if we go to the positivity, the motivational, or the things which are related to our success, growth in the life, definitely it will attract those things. So we must think about this thing and be very, very cautious and careful about these things, that what are we getting our mind, exposed to. हम अपने माइंड को किन चीज़ों के लिए या किन चीज़ों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, या उसे किस चीज़ों की तरफ एक्सपोज करना चाहते हैं, so that we can take our life further accordingly. So it's very important that we must think about this thing. This is the first and basic principle. Then the second thing is always cultivate good thoughts and remain positive. Yes, my friends, हमेशा हमें good thoughts cultivate करना चाहिए. अपने दिमाग में कुछ बहुत ही positive चीज़ें, एक बहुत ही अच्छे विचार दिमाग में रखने चाहिए, and should always try to remain positive. I know ये कहना बहुत आसान है, but many of you would say that this is not that easy. I understand that this is definitely not easy, but can we not try? ट्राई करने से पहले हम किसी चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि ये ईजी है या डिफ़िकल्ट है? यस माई फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू विल फेस डिफ़िकल्टी फॉर डूइंग दीज थिंग्स. यू विल हैव चैलेंजेस ऑन दैट थिंग फॉर श्योर, बट when you try, keep on try, I am sure definitely someday or the other you will definitely be able to achieve this thing. गुड थॉट्स को कल्टिवेट करिए, अपने दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ें लाइए. फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत से लोग कई बार ये सोचते हैं, अच्छा किसी ने हमें कुछ बोला कि यार तुम्हारे बारे में ये पर्सन ये बात कर रहा था, वो आपके बारे में ये बोल रहा था. देन इमीडिएटली वी थिंक, अच्छा उसने ऐसा बोला, हाँ वो ज़रूर बोल रहा होगा. एंड व्हेन समबडी सेज दैट द पर्सन वाज प्रेजिंग एक्चुअली एंड डिड दिस गुड थिंग फॉर यू, देन यू विल से अच्छा उसने ये किया. वी गेट काइंड ऑफ अ सरप्राइज थिंग. हम आश्चर्य में पड़ जाते कि उसने मेरे लिए अच्छा किया, बिकॉज वी आर यूज टू गेटिंग एंड पुटिंग नेगेटिव थॉट्स ऑन प्रायोरिटी. सबसे पहले नेगेटिविटी आती है दिमाग में, अच्छा इसने कहा, ज़रूर कहा होगा, ये तो है ही ऐसा. I mean, इससे कोई उम्मीद की भी क्या की जा सकती है? We must stop these things, because if we keep on thinking about negative things, it will have only and only negativity into our life. We won't be gathering or attracting positivity. So we must think about this thing, that we should always and always create and generate good thoughts and should remain positive. So then the third thing comes into the picture is, and it is very, very important, my friends, and very, very practical thing, that if you think problems, or if you think about problems, you attract problems. Yes, my friends.
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे, अरे यार अगर ऐसा किया तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए, मैं ये नया काम शुरू करने वाला हूँ, कहीं इसमें ये दिक्कत ना आ जाए, कहीं इसमें वो ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, वी इफ़ वी कीप ऑन थिंकिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स, वी अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। यस, हमें ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है। सो वी मस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, दैट डू नॉट थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स माई फ्रेंड्स, इट विल अट्रैक्ट more problems. Last but not the least is, and this is completely opposite to the one which we've just discussed, that if we think of blessings, we attract blessings. Yes my friends, अगर हम blessings की बात करेंगे, अच्छी चीज़ों की बात करेंगे कि yes हमारे काम अच्छा होगा, हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, या we will have a good time or a good thing, then definitely we attract the blessings only. हमें blessings ही मिलेंगी, हमारे काम अच्छे ही होंगे। So it is again a kind of a sign of पॉजिटिविटी। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचेंगे देन डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ हमारे सोचने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, चीज़ें लाइफ में ख़राब भी होती हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट वी शुड नॉट स्टक इन देयर, वी शुड थिंक अबाउट कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हुई, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो चीज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। वर्क ऑन दोज थिंग्स, get your things done and move back again, come back again my friends, not just stuck in with this thing कि अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया। no, problem was, you know, it may come, it may not come, but the main and important thing is to be ready always for those things with a positive and a strong solution. We should learn from the mistakes and go forward. This is very important. So I hope you've understood these basic principles of laws of attraction, and I'm sure you would also try to inculcate or amalgamate all these things and principle into your life to see the better results in your life. So if you found this video useful and helpful, then please do share it with your friends, family and colleagues so that they can also take help from this video, my friends, and move ahead in life. And if you love Mindyology, love our videos and content, then please do subscribe to our channel so that you can get the latest update from us always on time, my friends, if you hit the bell icon. So please do remember that. And like I always say, please, please, please do share your feedback, suggestions and comments into the comments box, or you can write us at info.mindyology@gmail.com and let us know what you think about Mindyology. Share your thoughts and feedback, what you feel about Mindyology, because it's your own channel, my friends. And let us know if you want to make us the videos on your choice of topic. We would love to do that. So it's time to take a final leave from all of you friends. We shall meet next week at the same channel, Mindyology. Till then, do take very good care of yourself, and I wish you a wonderful and a blessed day ahead. Bye-bye.